Hello everyone, my name is Shyam Manavat and I welcome all of you once again in a new series, new chapter. Its name is Set Theory. बहुत ही आसान चैप्टर है. सेट मतलब क्या होता है? एक होमोजेनियस डेटा टाइप का कलेक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल, you say a group of boys, a group of girls, a group of vowels, a group of consonants, a group of um, prime numbers. Okay, something which is common in all the elements of that particular group. Yeah, that is set. Example के लिए you can see, okay, this is what you can learn from the definition. The set is any collection of objects satisfying a particular condition. एक कुछ common होना चाहिए उसमें, right? Here I have taken set A, which is all the vowels, set B, which is having the first 5 alphabet of English alphabets. Okay, इस तरह से आप set को define कर सकते हो. कुछ नाम हमें याद रखना चाहिए. देखो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है नहीं, सिंपल है. वी विल कीप द चैप्टर ओनली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सेट थ्योरी में देयर इज अ लॉट टू लर्न, बट व्हेन यू थिंक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नॉट मच. ओके, सो सबसेट क्या होता है? सबसेट इज नथिंग बट you make a smaller set from your given sets. For example, if I take these vowels, okay, so vowels का subset क्या हो सकता है? I can pick any element like um, A and I is subset. Okay, if I say A, B, I, this is not a subset of given set. क्यों? Because here B ये extra आ गया ना, so subset has to be made out of the elements of given set. एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, ये आपके एलिमेंट्स हो गए. ओके, ऑफ दिस ग्रुप कॉल्ड सेट. ऑलराइट, ओके. नल सेट क्या होता है? नल सेट इज एज नेम सेज नल. नल कुछ नहीं उसमें. ओके, नल सेट which has nothing, we defined by this sign, zero and cross. Complementary set क्या होता है? Yeah, before that we need to understand universal set. Universal set. Universal set is basically you have everything inside that. For example, if I'm talking about the vowels, which are from English alphabets, so for that, universal set will be all English alphabets. Universal set मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है. Okay? और set मतलब उन सब कुछ में से कुछ specific चीजें आती है. For example, set A, which is set of vowels, right? So, set को हम लोग एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. That's called Venn diagram. आपने सबने सब सुना होगा Venn diagram. So set you can represent just for representation, visualization of the question, situation, condition, set. Okay, so this rectangular box is a universal set. Okay, and here this is your given set. Let's say set A, which has what? A, E, I, O, U, right? All the vowels. So complementary set क्या हो जाएगा? इस A को मैं क्या करता हूँ ना, अंदर लिख देता हूँ. I hope you understood. So ये complementary set क्या हो जाएगा? उस यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को हटा दो. नाउ दिस विल बी ए complementary set, right? So from universal set, if you take out the given set, then what you left with? The complement. All right, correct. Okay, so complementary set or complement set is clear, universal set is clear. Now let's understand the relationship between two sets. एक होता है इंटरसेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना. एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. इट कैन बी you may find the question from set in logical reasoning or maybe in quant. It can be in either one of them. So set is important. Intersection मतलब common. Okay, this is the sign of intersection. उल्टा U. Yeah, that is sign of intersection. Okay, now एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने सेट ए लिया यहाँ पे, क्या? ऑल वॉवल्स. Set A is all vowels. A, E, I, O, U. B लिया है हमने the first 5 alphabets of the English alphabet, which is A, B, C, D, E.
Now if I want to present this in form of Venn diagram, ये जो Venn diagram हमने देखा, a square which is universal set and then गोल circle है वहां पे, which are representing the individual sets. Okay, so if I try to write all the elements inside A, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? A और B को ध्यान में रखना पड़ेगा because they are overlapping, because they have some common elements as well. Which are the common elements? Which are the common elements? A and E. तो मैं क्या करूंगा? इसको मैं लिखूंगा बीच में यहाँ पे A and E. Okay. Rest other elements of A, which are set A, which is I, O, U, हम लोग बाहर लिखेंगे. Similarly for B, we'll write B, C, D. अब आप ध्यान से देखो. If you only pay attention to set B, it has A, E, B, C, D सब है इसमें. And if you look at the set A circle, which has A, E, I, O, U, right? So you have used all the elements of given sets in the Venn diagram. अब इसमें से जो common area, which is a shaded area, A and E, that is called intersection. So intersection is what? Intersection is nothing but the set, or maybe say intersection is nothing but the set made out of the common elements. Made out of what? Common elements. Common elements. Okay, set which are made out of what? Common elements, right? That is intersection. Yeah. So elements which are common in A and B, both of them. Okay, great. Now the other relation is union. Union, you represent with the sign U. Okay, so intersection is ulta U or union is simple, जैसा है वैसा U. Now what is a union? Union is taking all the elements which are in the set A or B, or we consider the common as well. So this is union. जैसे if I write the intersection here, तो मैं कैसे लिखूंगा? intersection B is A and E. Okay, the elements which are common in A and B. यहाँ पे कैसे लिखेंगे? We'll say that okay, this is element of A or element of B. Keep in mind common भी हमें लिखना है, but एक ही बार लिखना है. Don't repeat them. Write only once. That means A and E, they are common, right? So don't write it twice. All right. So A union B, ये कैसा दिखेगा? Considering A is all the vowels, B is all the first five alphabets of English alphabet. तो A union B कैसा दिखेगा? आपको ऐसा दिखेगा. Set of A, B, C, D, E, I, O, U. सब ले लो यहाँ पे. Right? Got it? हाँ, मैं लिख के बताता हूँ फिर से आपको. जैसे A and E which are common. Here you have I, O, U. Here you have B, C, D. So write all the elements. That is A union B. Union को आप कहाँ यूज करोगे? When it is or. Intersection को कहाँ यूज करोगे? When it is and. When it is and. Okay. Union यूज करोगे when it is or. याद रहेगा? चलिए चलते हैं आगे.
Now, if you want to find out the relation between the number of elements in A union B, A and B and A intersection B, then this is the formula you need to keep in mind. Okay, what is that? Number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. ऐसा क्यों करते हैं? माइनस क्यों करते हैं? Because when you're counting A as well as B, you have counted the common elements twice. फिर से A, E, I, O, U और वो same example लेते हैं कौन सा? Let me write this again. Let's assume the set A is A, E, I, O, U and set B is A, B, C, D, E. Now, if I add both of them, तो क्या होगा? तो क्या होगा? If I simply add both of them, तो क्या होगा बताओ? ऐसा दिखेगा वो। ध्यान से देखो, ऐसा दिखेगा वो। A, E, I, O, U, A, B, C, D, E इस तरह से दिखेगा if I simply add it, right? So now this is wrong. You can use one element only one time. तो आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? आपको ये एक एक्स्ट्रा ए और एक्स्ट्रा ई है ये माइनस करना पड़ेगा। ना ये एक्स्ट्रा ई और एक्स्ट्रा ए आता कहाँ से है? इसको अगर अलग से डिफाइन करना है तो आप क्या बोलोगे? दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी, राइट? एंड ये क्या लिखा है हमने? ए प्लस बी। यू गेटिंग इट? That's why if I want to find out A union B, which is the element of A as well as element of B, okay, element which comes in either A or B, and the common was also counted, but only once. Yeah. So if you want to write the relation between them, then this is the formula. I hope you understood why we are subtracting this. ये important है समझना हाँ, because when we are going to do 3 sets, जब 3 set का करेंगे तो why we are subtracting, you will get to know when you understand this very well. तो आप देख सकते हो इसको फिर से रिवाइंड कर सकते हो, इट्स इजी। ऑलराइट, सो more to understand about the Venn diagram. Now, suppose if you have this A and B and some common between A and B, तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये तो हो जाएगा आपका दोनों का कॉमन, राइट? ये हो जाएगा दोनों का कॉमन, बोथ इन A and B. Now, from the set B, if you take out which is common, तो बचेगा क्या? Element which are part of only B. So when you say only B, that means you need to take out the elements which are common with other set. Okay? Same goes for A also. If you want to find out only A, then it has to be the entire A minus you do the common one. So you'll have only A. Okay? Only B, only A. समझ में आया? मतलब the elements which are not in any other set, which are not in any other set. Okay? Which are not in सिर्फ उसी set में, सिर्फ B में. Okay? You want to take example? इसको याद रखो, मैं पूरे इस लेक्चर में इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। So if I want to write only B, if I want to write only B, so that should be only what? B, C, D, because A and E are common with A as well. Yeah. If I want to write only A, then it should be what? Then it should be what? I, O, U. Okay. So A and E, which were common in A and B both, उसको हमने हटा दिया यहाँ से। Got it? Now, if it is put under the universal set, so इन सेट के बाहर, इन सेट के जो बाहर वाली दुनिया है, जो हमने कॉम्प्लीमेंट लिया था ये, बाहर वाली दुनिया है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? How do we read this? We'll say, these are neither in A nor in B. They are neither in A nor in B. याद रहेगा? ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत ईज़ी लग रहा है, मुझे पता है बहुत ईज़ी लग रहा है, बट ये सब इम्पोर्टेंट है। ओके, बिकॉज़ व्हेन वी सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। जब हम लोग बोलेंगे कि पीपल हू डोंट लाइक आइदर वन ऑफ द टाइप ऑफ टी और टाइप ऑफ ड्रिंक्स और टाइप ऑफ फूड, देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑल द सेट्स। ओके, चलो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। सो हियर वी हैव
In a college of 60 students, 38 students play cricket, 44 play football. If every student play at least one of these two sports, find the number of students who play only one sport. Okay, only one sport निकालना है, only one. Okay. Now I will use a Venn diagram to um, make you understand this question. So let's say this is your universal set, and then you have um, if every student play at least one, that means there is no one which is outside the set. Okay, everyone is playing either one of them. ये बहुत important point है. None of them are being outside the set. तो जितने भी number, जितने भी 60, it all has to be inside the set. Okay, so now if we say, let's say these are the people who are playing what? Cricket. Okay, and let's say these are the people who are playing football. Football, you know? Yeah, football. Just a minute. Yes, change the color. अच्छा लग रहा है अभी. So this is for cricket, and here we have the other one for football. Okay, ध्यान रखेंगे ये लोग. All right. Now 38 play cricket. Not only cricket. Only cricket अलग बात है. Cricket मतलब that means there are some common as well. अब common को निकालना है तो क्या कर सकते हो? You can apply the formula. What is the formula? Formula says what? A union B. Okay. Or let's say C union F. Number of people who play cricket or number of people who play football. Okay. Every student is playing at least one of them. So this should be equal to 60. Okay. If some of them are not playing any one of them, then it cannot be equal to 60. Some student will be out of this cricket or football. आ रहे समझ में? बहुत लॉजिकल है इसमें तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए. Now, question said the total cricket is what? 38, and total football is what? 44. Now we have no idea how many of them are common between them. No idea? Nobody, sir. Let's get an idea. So here we have union ka formula, which is equal to number of elements in C plus number of elements in F minus which are common. ये हमें नहीं पता है. Intersection. Substitute करो. This is 60. This is 38. This is 44. This is number of elements in C intersection F. Okay. इसको लेके आते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा एंड 60 को उधर लेके जाते हैं. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C intersection F, which are common, that will be 38 plus 44 will be 248 minus 60. कितना हो जाएगा ये? 22. अब आप ये बोलो, यहाँ तक ठीक है ना? अभी आप S को ऐसे, you can look at it like the common between them, there are 22 people. ध्यान से, this practice is important. ध्यान से समझना. अब मुझे पता है बहुत इजी है, बट फिर भी ध्यान से समझो. Total people who are playing cricket is 38. So ये पूरा सर्कल क्या है? This पूरा सर्कल is 38. उस पूरे सर्कल में से this 22 is also part of the same circle, which is defined to be 22. So what should come here? Majority of the student यहाँ पे 38 लिख देते हैं, वो गलत है. Because here this 38 is defined for only cricket. देखो, आप क्रिकेट खेलते हो और आप ओनली क्रिकेट खेलते हो, दोनों में डिफरेंस है ना? तो दिस इज फॉर ओनली क्रिकेट. ओनली क्रिकेट कितना होगा? टोटल क्रिकेट 38 minus the common are 22. So difference is what? 16.
ओके, अब आप ध्यान से इस पूरे क्रिकेट वाले सर्कल को देखो। व्हाट यू हैव 16 ओनली क्रिकेट एंड 22 हु प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। तो क्रिकेट तो है, दिस इज इक्वल टू 38, राइट? है ना? यही तो क्वेश्चन में दिया है। अब वैसे ही आप फुटबॉल के लिए सिर्फ फुटबॉल निकालना है, तो 22 प्लस व्हाट शुड बी इक्वल टू 44, बिकॉज टोटल फुटबॉल इज गिवन एज 44। तो 22 प्लस 22 शुड बी 44, राइट? तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 22। ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? बताओ, क्लियर है क्या? और सबको ऐड करोगे तो 60 आ जाएगा। दैट मीन्स नोबडी इज आउटसाइड दिस सर्कल। ओके, यू आर हैविंग ऑल 60 स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ देम आर काउंटेड, राइट? तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मतलब क्या हुआ यहाँ पे? हमें निकालना क्या है? हु प्ले ओनली वन स्पोर्ट। ओनली वन स्पोर्ट वाले क्या बचे? देखो, ओनली क्रिकेट। बताओ, ओनली क्रिकेट should be equal to 16, and that's how only football should be 22. Then only one sport should be 16 plus 22. कितना हो जाएगा? 38. That's your answer. 38 is your answer. Got it? How do you have 32 here? 38 here, right? Okay, एक और एग्जांपल देखें, चलो और एग्जांपल समझते हैं। Now here you have, समझो इसको। The question is, you can pause the question and try it by yourself first. आप खुद से भी कर सकते हो। Question is, in a survey, 50 people subscribe only to Netflix. 35 subscribe only to Netflix. मतलब उसमें Netflix as well as Amazon ऐसा वाला काउंट 35 में नहीं है, only Netflix. And 110 subscribe at least one of them. Okay, at least one of them. At least one of them मतलब क्या होगा? It is either Netflix or Amazon. हाँ, क्या लगाया? At least one of them मतलब क्या लगेगा? और? So this is given to be what? 110. Can I say Netflix is equal to 50? नहीं, मैंने अभी तो समझाया। It should be only Netflix as 50. So only Netflix कैसे दिखेगा आपको? मैं इक्वेशन में लिख के बताता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं है उसकी, वेन डायग्राम ज्यादा अच्छा रहेगा उसमें। Only Netflix should be equal to total Netflix minus if somebody has subscribed for Netflix as well as Amazon. ओके, अभी हम सिर्फ Amazon क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज क्वेश्चन में Amazon प्राइम के अलावा और कुछ दिया हुआ नहीं है। As per, वो it can be Z5 also, but it's not given in the question, so we can only count with Amazon Prime. Okay, and only Amazon कितने अभी? only Amazon Prime, ये क्या हो जाएगा? Total Amazon Prime minus which are common with both. Okay, so this is equal to 50 as per the question. This is equal to 35 as per the question, and this is equal to 110, either or. 15 subscribe to neither of them. Neither of them. Oh, ये तो कॉम्प्लीमेंट वाला हो गया, है ना? कॉम्प्लीमेंट वाला हो गया। What percent of the total participants subscribe to both? Both. अगर हम both मतलब क्या? Netflix and Amazon. मतलब हमें निकालना है यूनियन का वैल्यू कितना है। ओके, पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग। आप यहाँ से भी कर सकते हो। मुझे तो वेन डायग्राम बहुत अच्छा लगता है। वेन डायग्राम से थिंग्स आर वेरी क्लियर। So let's see. Let's make a Venn diagram. Right. हम्म, हम्म, ओके, ये हो गया आपका नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम।
नेटफ्लिक्स, परफेक्ट। नाउ ओनली नेटफ्लिक्स कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे, विच इज 50, दिस एरिया। ओनली अमेजोन कहाँ पे आएगा? हियर, विच इज 35। This we need to find out. Outside of that, which are neither one of them, as per the question, that is how many? 15. So, this is what I was trying to explain you earlier also, that if it is neither one of them, then it should be outside both of the sets, but it has to be inside the universal set. Okay, so inside the rectangle. Question said, ये जो यूनियन है, ये क्या है? यूनियन क्या है? 110, मतलब ये पूरा पार्ट कितना है? 110। इसका मतलब क्या हुआ? 50 plus x plus 35 is equal to 110. Okay, not necessary that you have formula all the time. 50 plus 35 is 85। 85 अगर उधर लेके जाएंगे तो बचेगा कितना? 25, right? So x is how much? 25। x is what? Netflix and Amazon, right? The intersection one. Clear इतना? Now why am I saying this 110? I hope समझ में आ गया होगा। Union मतलब it's Netflix or Amazon counting common as well. Okay, that is at least one। at least one ना, at least one मतलब कि at least only one तो होना ही है और both भी होना ही है। at least one में आएगा वो, right? Now क्या आंसर आ गया? हमारा आंसर बस बस पास नहीं है, बहुत दूर नहीं है। क्वेश्चन सेड, जो दोनों वाला है ना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल सब्सक्राइबर of both platform. So to find the percentage, both, which is 25, should be divided by total number of people. Total number of people, that means here you need to count 15 as well. So 15 plus 110, 110 जो at least वाला है ना, 110, राइट? उन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 110 प्लस 15, ये हो जाएगा 125। ये 125 समझ में आया क्या? बताओ। देखो क्वेश्चन को पढ़ो। What percent of the total participants? Total participant. It didn't say total subscriber. Total participants. So participants तो at least one subscriber plus non-subscriber दोनों है। So 110 for at least one subscriber and 15 for non-subscriber. That's why it should be 125. Okay, multiply by 100, simplify कर दो। This is what 1 5 1 by 5 into 100 कितना होता है? 25%, right? So answer is what? 20%। Clear? 20%। Let's take one more example। चलो और समझते हैं। Here we have, at a summer camp, a participant can choose to skip swimming और ट्रैकिंग। अब ये थोड़ा आपको एक इंटरेस्टिंग वाला पार्ट दिखेगा। इसमें आपको ऐसा भी कहा है कि स्किप करना है, नॉन स्किप करना है। सो लैंग्वेज बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई अटेम्प्टिंग इट बाय योरसेल्फ। Yeah, I hope you have come closer to the answer। क्या है यहाँ पे? Chosen to skip swimming or trekking, but cannot skip both। Okay, दोनों skip नहीं कर सकते। After 45 participants skipped swimming, 25% skipped trekking, there are 15 participants who choose to do both of them। Choose to do both of them। Find the total number of participants in the camp। इसमें आप वेन डायग्राम बनाना चाहो बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप वेन डायग्राम देखोगे, वेन डायग्राम अगर देखोगे यहाँ पे आप, मैं दिखाता हूँ आपको वेन डायग्राम। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वेन डायग्राम है यहाँ पे। या यू हैव सीन दिस राइट। ये मान लो कि सर्कल है। हाँ, मुझे पता है सर्कल जैसे नहीं लगेगा, मान लो कि सर्कल है। ओके, कितने अच्छे हो आप लोग, मान लेते हो मेरी बातों को। सो हियर दिस सर्कल इज पीपल हु 45 पार्टिसिपेंट हु स्किप्ड स्विमिंग। सो ये स्विमिंग स्किप करने वाले लोग हैं। कितना है वो? 45। और ये क्या है? स्किप्ड ट्रैकिंग। ट्रैकिंग स्किप किया, ट्रेकिंग सॉरी, नॉट ट्रैकिंग, ट्रेकिंग। ट्रेकिंग स्किप किया है। कितने स्किप करने वाले हैं? कितने वो लोग? 25। नाउ व्हाई आई हैव नॉट formed the overlapping part?
ये दोनों सर्कल को ओवरलैपिंग वाला डायग्राम क्यों नहीं बनाया मैंने? बिकॉज़ क्वेश्चन में बोला है, बट कैनॉट स्किप बोथ। तो इफ आई एम प्लॉटिंग अ सर्कल व्हिच रिप्रेजेंट स्किपिंग स्विमिंग, स्किपिंग, ट्रेकिंग, तो दोनों में ओवरलैप नहीं होगा बिकॉज़ क्वेश्चन ने बोला है। यू डोंट हैव कीपिंग बोथ, ओवरलैप नहीं है वहाँ पे। अच्छा, इसके बाहर वाले लोग कैसे पढ़ोगे आप? दे हैव स्किप्ड नाइदर वन ऑफ देम। नीदर दे हैव स्किप्ड, नीदर दे आर पार्ट ऑफ स्विमिंग स्किप सर्कल, नॉर दे आर पार्ट ऑफ ट्रेकिंग स्किपिंग सर्कल। सो ये जो बाहर वाला पार्ट है, दिस इज लाइक स्किपिंग नन, राइट? तो एज पर द क्वेश्चन, स्किपिंग नन क्या है? 15, इतना ही है। पूरे यूनिवर्सल सेट में इतना ही है, राइट? सो इट इज आइदर दीज टू सर्कल्स और आउटसाइड दीज टू सर्कल। मतलब क्या हो जाएगा? 15 प्लस 45 प्लस 25, आंसर आ जाना चाहिए आपका भी इतना 60 प्लस, सॉरी 70 प्लस 15 इज 85, 85 पार्टिसिपेंट्स। इजी है? ओके, सो हमेशा ऐसा नहीं कि इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा, यूनियन वाला फॉर्मूला लगेगा, नॉट नेसेसरी। ऑलराइट? Okay, so I hope you understood the case of two sets and then intersection, union, formula, some basic terms about it. अच्छा हाँ, एक चीज और बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ। ये सबसेट है ना, जो सबसेट बताया था मैंने आपको शुरुआत में, सबसेट, ये सबसेट, सबसेट फॉर, लिख लो इसको ध्यान से, लिख लो, कभी कभी काम आ जाता है। फॉर n एलिमेंट्स ऑफ सेट, फॉर n एलिमेंट्स ऑफ, ओके, एलिमेंट सेट, नो ऑफ अ सेट नहीं, एलिमेंट्स सेट, देयर आर 2n सबसेट्स पॉसिबल। जितने पॉसिबल सबसेट्स आप लिखना चाहोगे ना, वो टोटल मिला के 2n हो जाएगा। n एलिमेंट्स है, 2n, मतलब यहाँ पे जैसे 5 एलिमेंट्स है ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बचेंगे वहाँ पे? 2 5, व्हिच इज व्हाट, 35, सॉरी 32। ओके, नाउ null set is always a subset of any element, any set. Null set is always a subset of any set. ओके, सबसेट को लिखने का भी एक तरीका होता है। लाइक सपोज इफ आई से दिस इज C, ओके, सो विल से, नहीं नहीं C नहीं, कुछ और लिखते हैं। लेट्स से दिस इज D, हाँ D। सो ये अगर D है तो दिस D इज अ सबसेट, देखो छोटा वाला हिस्सा D की तरफ है, ऑफ A। ये A और I कहाँ से निकाला हमने? A से। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट, इफ यू वांट टू राइट, D इज अ सबसेट ऑफ A। ओके, हाँ, ये D इज है, दिस नहीं है वो, D इज अलग है। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू, योर लर्निंग, डेडिकेशन एंड कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन, और भी बहुत कुछ, राइट? ओके, so this is it in today's lecture. My name is Shyam Manavat signing off. I will see you in the next lecture. Till then, stay happy, stay healthy. नए लेक्चर का में आपको पार्टिसिपेट करना है, वो भी देखना है, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 सेट के लिए। ऑलराइट, सो आई विल सी यू देयर। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।